parallelly, while studying about data science, you should also study about that field. Correct. So that when you go in that, when you do your first job in that field, आप fresher नहीं हो आप. Now you have the knowledge. You might be fresher in terms of experience and everything, but in terms of knowledge, you are not a fresher anymore. Hello, everyone. Today we are exploring a fascinating journey into the world of data science. Today we have with us Heenal Sheth. She is in data science field. She is practicing data science, and also she comes from a non-tech background. So along with her journey in data science, we'll be knowing about life perspective as a whole, the POVs, how we see life, how we perceive life, and how can we work towards that. So, hello, Heenal, welcome to our podcast. So, let us start with your brief introduction first so that our audience can know you well. Thank you for having me on here with you. I don't know from where to begin if I start giving my introduction. So let's start from somewhere where it aligns with my purpose or with my journey. So I am Hinal Seth. I'm working as a data scientist currently in Jaipur, Rajasthan, and I come from a background where I had no idea what data scientist was or what is IT field, what do you do with computers. I was never a tech fascinated guy. I was never. I was always about let's do something creative with life. Let's do something amazing with life. And for me, amazing was being a doctor and creative was being a dancer. So these two D's were actually the base and the foundation of my life. So I come from that background, and maybe God show me the way, the path to become a data scientist. So from leaving two D's, I'm right now in a third D, which I never thought of. That is indeed a very unique introduction to have, that just hopping into the third D, that is so much unexpected. And of course, like when we talk about getting into uh, not just data science but in IT field, as you said, or in tech as a whole, so mostly people coming from IT backgrounds or science backgrounds, they feel like they'll be going into IT field. But for a person who has not been familiar with even the I of IT, I think this is a very unexpected thing, and I'm pretty sure it would have taken a lot from your side to reach where you are today. So, of course, thank you so much for your introduction, Heenal. So Heenal, so let us start with your journey as a whole, and let's talk about your journey and what was your field of study or career before you made the pivot to IT field or data science. So, being born in a North Indian family, it was very very common over here कि मम्मी ने बोल दिया कि मेरी बेटी बड़ी होके डॉक्टर बनेगी. Literally, I was just born and my mother was like she will become a doctor. She had her dreams with me और मैंने भी perceive कर लिया कि मैं भी डॉक्टर ही बनूंगी. I did not had any other thoughts, any other ideology, nothing. मुझे भी डॉक्टर ही बनना था बिकॉज माई मदर सेड सो एंड आई डिडंट थॉट इट थ्रू. आई वाज लाइक मम्मी ने बोला डॉक्टर बनेंगे एंड मुझे भी डॉक्टर ही बनना है. आई स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर. आई स्टार्टेड अरेंजिंग माई लाइफ towards the thoughts कि I will become a doctor in certain age. So I'll have to pass this thing. I have to do this thing. पूरा प्लान रेडी है विद अ ट्विस्ट दैट आई एम अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि डॉक्टर बनने के लिए यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द कॉलेज. आई नो विच कॉलेज टू गो. आई नो व्हाट थिंग्स आई हैव टू स्टडी. आई इवन नो कि मुझे स्पेशलाइजेशन किस में करना है, एमएस किस में करना है, एमडी किस में करना है, क्या आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग विदाउट the knowledge कि मुझे entrance exam भी देना है after 12th. I even wrote the entrance exam for this JEE mains. I was aware of that. My father told me about that, but it never struck me that शायद MBBS के लिए भी entrance exam होगा. I never asked anyone. I never researched about it. As I said, computer का CV मेरे लिए बहुत दूर की बात थी. I was never fascinated by this term. So internet स्क्रॉल करना या साइबर कैफे जाकर कुछ चीजें रिसर्च करना. आई वाज नेवर दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो आई नेवर डिड दैट रिसर्च एंड आफ्टर 12th I realized कि I had also to give this NEET exam. Now I had to take a drop. So I was having maths and bio in 11th and 12th. So I gave JEE main and I was selected. I passed that exam. I had to give JEE advanced. My father wanted me to become an engineer and my mother wanted me to become a doctor. My heart desired to become a doctor. So I was like कि मम्मी ने बोला है वही करेंगे. Right, right.
I gave JEE mains, but I did not want it to become an engineer. I did not tell anyone that I passed the test. I kept it to myself. I was like, it's okay, we'll take a drop and we will study for NEET and we will see. So math has been my favorite subject since like childhood. Even though I wanted to become a doctor, yeah, math was my favorite subject. Before the classes starts, before the year start, मेरा math का course complete हमेशा रहता था. I used to be like कि अरे ये मुझे आता है. Even in 10th and 12th, before teachers started teaching anything, I have done that part myself. I was that student. I was that fascinated by math. And when it comes to biology, I'm like, even if you teach me 10 times, I won't understand. I won't remember the nomenclatures, the scientific names. I can't remember those things. So this interest, the conflict in the interest and the desires, those were very difficult for me to manage. Somehow I took a drop. I prepared for NEET. I scored well in physics. I scored well in like physics. Out of 45 questions, almost 40 questions were right, which was a very good mark. But if you see in chemistry and in biology, I just could not reach the bar. People would usually do good in biology because they are preparing for NEET, right? And for me, it was quite opposite. Then I took another drop, a second drop, just to be very sure that I can do it. I can still prepare for biology and chemistry. I can do this. I did. I actually performed very well in biology and chemistry as well in the second drop. And in physics, I was anyways very good. But I could not clear the exam. I was left with only 7 marks. But those 7 marks were my future deciding factor that I cannot waste another year. I wasted 2 pretty years of my life and I did not want to put in another third year to this. So मैंने वो field ही छोड़ दिया. Now it's mid of the year, October, मतलब mid of the educational year. October आ गया था. None of the colleges were giving any admissions. And I was like, क्या करना है? किधर जाना है? I have no idea. I was very sure कि if I'm not becoming a doctor, I'm not studying biology or chemistry. That is for sure. कि ये तो नहीं पढ़ रही. I want to study physics, I want to study mathematics, I want to study statistics. These were 3 topics in my head, 3 subjects कि मैं ये 3 subjects ही पढ़ रही हूँ and I would go in quantum physics in future. This is what I thought about it. Then I went to colleges one after another and finally one college accepted me to take my admission. I enrolled there. They did not had statistics. They had mathematics, they had physics and I was like, I can't study chemistry, I can't study biology. Now what? So I had to choose computer science. I was forced. There were no subjects available. So destiny forced me to select computer science because I was sure if I select chemistry, I cannot put my interest. So I thought, why not try a new subject? So I was saying that computer science was a altogether new subject for me. So I thought, why not give a chance to altogether a new subject because I was pretty sure chemistry was not my cup of tea. I enrolled in computer science and interestingly, I started liking the subject. I started doing the code. I started learning about networks and about so many things because it was all new for me. The kick that I was missing in chemistry and biology was nothing was new and everything was boring to my head. But computer science, everything was new, everything was fascinating. Even if someone is doing very simple thing, I'm like, oh wow, everything was fascinating for me. And I started liking the subject. Yeah, even a very simple code. It was like, oh my god, we can do this. I can do this. I never thought it in that way. So it fascinated me. I started doing writing so many codes. I started making projects. So that's how I started learning about computer science in my college. Then came the time to do my master's in quantum physics as I had planned. That I would go in quantum physics because I'm not becoming a doctor now. So I gave this entrance exam for quantum physics. Now I was prepared. Now I was aware that I had to give entrance exam. So I prepared for the exam. I gave the exam and unfortunately, COVID came, and now the colleges are giving me admission for online studies. And I was like, I'm not investing this much amount of money studying quantum physics, not doing lab, and studying online. I'm not doing that. I would take a break. It's okay. I already took a break of 2 years now. This would be my third break. I was like, it's just a matter of 2-3 months. It's okay. 6 months passed. Colleges were not accepting any offline students. They were saying that you had to do at least first year online. And I was not convinced. I was like, I had to go to the lab.
I want to do all the experiments. I cannot do it online. I did not enroll in the college. I was still waiting to COVID to pass. Like, okay, let this moment pass, let this months pass, and we will get the admission in the college. Nothing happened. 6 months passed. Finally, I came across this data science field one day. Then I thought to research about it. I just saw what it is, what all we can do. Right, right. That introduction to data science was very fascinating again. Just like computer science, it was also very fascinating. I was like, I'm not doing anything. I'm sitting idle at home. Why not try this? Science, right. just just like how I tried computer science, I also tried this data science thing. I took the diploma certification course and I started enjoying the class. I started enjoying doing the things. Meanwhile, I was also working as a content writer, as a social media marketer and as a content writer. So that was my full-time job, work from home. I was doing that side by side. Parallelly, I was studying data science. Right. And while studying, exploring, doing the project, I just started applying for jobs everywhere. And one fine day, I got a call from this company where I'm currently working, and I passed the interview round, the technical round, the HR round. All the rounds were cleared. I got the job offer from there, and so I was like, it's a good opportunity for me to step out of the house. I've been sitting in the house for so long. Even though I was working, but that was work from home, right? So I thought, let's just take the job, let's just go there and we'll figure out later. I can still do I still have this thought in my mind that I will do quantum physics. Even after taking this job, I'll do quantum physics and we will study. That Right. was my plan altogether. But the day I started my job, everything changed for me. Every single thing. I started loving my job. I started accepting the life. Everything was very like just out of a fairy tale. Everything was so good. Studying was a different thing, but implementing those things in your job, in your professional life, that give me a new perspective towards life. That everybody has a purpose, and sometimes you are very lost. You don't know what path you have to follow. You have certain desires, certain dreams, but you are not very well versed with what path you have to follow, and that's where your destiny or maybe God or whosoever you believe comes in and they show you the real path, that you don't have to go that way. You have to go this way, and this is your path. So I started enjoying the work, and that's how I learned that I had to become this to be this happy. Absolutely. I can see how happy and contented you are and the way you're sharing your journey. So that says a lot. And of course, it is very inspiring. Like you started working as a content writer in a remote job and you were in your home for so long. And finally, like God showed you that path that now, yes, because you are familiar with computer science, maybe you can try out this new field and maybe you can start applying it, and then you actually went on to your office. And usually one new thing that I found from your journey is that you loved your office culture, and the day you joined you were very excited, and you gained a new perspective of how things work. So usually things are different. Like uh, normally when a student is in college, they have the best time of their life. After that, they think that okay, I'll be going into the corporate world, I'll be going into a job, and then my life will get monotonous, 9 to 5, no work life balance, no enjoyment, nothing. So what do you think about this normal belief or the normal perception we have about doing a corporate job, and how your experience was different? And if there is a perspective difference, and how would you like to address that? You can share your thoughts in any language, just the message matters. So basically बचपन से ना ये कहा जाता है कि 10th पास करनी है then life is fun. Then कहते हैं कि 12th पास कर लो then life is fun. Right. Then they say कि college की degree ले लो then life is fun. Yes. Then they ask you to just take a job and then say life is fun after that. Life is fun. Then they ask you to get married, life is fun after that. So this desires and this expectations of society कभी खत्म नहीं goes होता. on. It goes on. And it is just a push to you कि इतना ही करना है. Because if we see the larger picture, if we see कि we have to pass this many steps, this many milestones, हम डर जाते हैं. We might not jump, we might not start walking. तो हम रुक ना जाए, इसलिए सोसाइटी एक पुश करती है कि only this milestone. Once you reach there, only that milestone. Once you reach there, now only this milestone. Like this, Absolutely. they push you कि बस
एक के बाद एक के बाद एक. So college days are obviously most amazing days of anyone's life. When I had my best time in my college, I won't lie, I did so many things, and I really loved my college day. Not because of the college, but because of the things I did. Right. While working remotely as well, I loved my job. I enjoyed being a content writer because I get to do so many things. I get to be expressive. I get to be exploring. Even I get to travel a lot because I was work from home. Right. I was working remotely. Okay. I could easily wind up my work and work from anywhere. And I used to travel a lot. Even though it was COVID duration, I traveled a lot. So Right. that was also one very good part of working as a content writer. Then, when I came to Jaipur to become a data scientist as my first role here, life shifted me from exploring the cities to being settled in a very new city. Now, the explorer in me, the creative person in me came out, and he's like, okay, we'll explore every each nook and crook of the corner, everything that is there. I did not miss a single thing in Jaipur. I know the best tea shop. I know the best vada pav shop. I know the best outfit shop. I know everything. Just name it and Amazing. I know it. So it was not about what milestone you are looking towards. It's about what Correct. you are, how you're living it. For now, the milestone that I had was have this job. Okay. Be financially independent and be something that people or your parents can be proud of. I reached that milestone. Now next is do this something, get a hike or get promotion, something. There is some new next milestone standing right in front of me. But my Right. perception towards life is do not wait or do not work very hard just to reach that milestone. While working hard, you have to work hard. That is Absolutely. inevitable. You have to do that. While Yes. working hard, while putting in all the efforts, enjoy the life. Enjoy life. Even if you are Yes. a student, enjoy that life. When you are a person who's working in a corporate culture, in any culture, enjoy that time. When you are getting married, enjoy that time. So enjoy every part of life. You might not have certain amount of time to enjoy. When you are working, you have to work, let's say 9 to 7. 9 to 7, if you are working, you might not find time to enjoy. You still have 2 hours left for yourself. Take those 2 hours for yourself and enjoy those 2 hours. Those 2 hours will give you a dopamine boost for next 24 hours to go. And do it every day. Repeat this process. That's how you will enjoy the life and you will find the balance. Nobody will give you that balance. You'll have to find it. Very true. Actually, this thing is very important, and I think we all should, especially students, should keep this in mind because I personally, when I see myself, तो there are times जब मुझे लगता है कि नहीं, अभी पढ़ने की एज है, अभी 1-2 साल बस पढ़ाई करनी है. I cannot do this, I cannot do that. Plus, we get some FOMO when we see people doing so much better than us. We feel कि नहीं यार, I should not be enjoying, I should not be doing XYZ thing, I should just be doing this. So this thought has affected me a lot, and recently I also realized the same thing, that it is very important कि जिस भी phase में हो आप, भले you are a student, you are preparing for a job, you are inside a job, you are inside in a service based company, आपको product में जाना है, तो ये नहीं है कि product में जाके मुझे enjoy करना है, नहीं. I have realized this, and I'm really thankful to people around me and even you for strengthening this thought, because it's very important कि जब हम किसी phase में होते हैं तो we are not just monotonous. हम we should not be missing out on the small joys, the small happiness that will overall keep our energy and our mood uh, good all the time. So I think it is reflected in your energy, in the way you're talking, in the way you're presenting, that yes, you have that experience as well, and you have also made sure to give enough love to yourself, give enough happiness to yourself, that you are being able to be here and share it with people like me, and students will be audience will be watching this. So I think this is indeed a very good suggestion for this generation who is living inside this stress bubble, that हमको ये करना है, हमको वो करना है. So of course that is a very good thing, Heenal. So that was a very good perspective. And when we talk about corporate life,
So can you share your progression in your office, like as you shared ki, when you joined your office, then your different phase started, and कैसे था जब तुमने job join की, and maybe when we are new into our jobs, we are not proficient in everything, हमको हर चीज मालूम नहीं होती है. So even the office environment matters a lot, and plus combined with the individual's efforts. So can you maybe I'll title, can you navigate the corporate life that you have experienced, and maybe if there is anything that you would like to share with the audience, or any learnings that you have had from that. So, as a fresher, I was in this field. I was very excited to take on the role. मन में ऐसा था ना कि ये करेंगे, वो करेंगे, नई फैमिली बनाएंगे. I had this family concept in my head कि हम ऑफिस जाएंगे और एक नई फैमिली बिल्ड करेंगे. I don't know why, but I think हर फ्रेशर के दिमाग में ये आता है कि जैसे कॉलेज में एक फैमिली थी, स्कूल डेज में एक फैमिली थी, वैसे ही शायद कॉर्पोरेट में भी एक फैमिली होगी. मेरे भी दिमाग में था Yes, same thought. yes. When I started this job, I treated everyone like family. Literally everyone like a family. और सबने वही प्यार दिया, वही चीजें वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हुई और बहुत मजा आया. But somehow after 2 months, 3 months, 4 months, I realized that this is not a family. Here people come for a certain period of time from 9 to 7, and after that they go to their real family and they don't care about you. Absolutely. Right. Nobody cares about you in this culture. Nobody considers you their family in this culture. And you should also not consider other people your family. Why? This is a very important learning for me. मुझे लगता था कि क्या क्यों नहीं बना सकते फैमिली, क्या दिक्कत है, what's wrong? If it is your family, you will enjoy the work, you will love the work, you will love the culture, और तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा, तुम कभी sad नहीं होगे, कुछ गलत हो भी गया तुमसे. If you did something wrong in your work, everybody will support you. क्या गलत है फैमिली बनाने में? It's the best thing you can do, right? But why not to make a family in a corporate culture? This is my learning. My first learning actually in this job. So उसका reason है सबसे बड़ा कि family में you can be vulnerable, right? You can tell your parents, your family members that you are feeling so and so, and you need a break or you need something. Absolutely. They won't judge you. Your family is a judgment-free space. Your family, your close ones will never judge you. Maybe distant relatives can judge you कि यार क्यों कर रही है ये ऐसा, but your close ones will never. In corporate culture, even though you call them your family, they will judge you. Maybe not in front of you, but behind your back. Thing number one, that judgment will always be there. To maintain your mental peace, you should not consider them your family. You should still be nice, you should still be gentle, you should still be doing all the good things to the people around you, but just not give you yourself that expectation कि ये मेरी family है और उनसे वो वाला bond जो हमने बना लिया है, वो वाला बॉन्ड Right. अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, खुद हर्ट नहीं होंगे. Correct. इट्स जस्ट फॉर योर ओन सेफ्टी कि खुद का मेंटल पीस बचा के रखो, खुद को हर्ट मत करो. देखो कॉर्पोरेट में एक बहुत बहुत कॉमन सी चीज है. You guys are doing task as a team. कुछ भी फटा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी इशू आया, everybody looks for कि यार किसको ब्लेम किया जाए, कि किसी एक को ब्लेम कर देते हैं और बाकी सब बाहर निकल जाता है. It's very Right. common. Yes. And I think there's nothing wrong in it. क्यों? क्योंकि कुछ लोग वहां पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं. They cannot afford to say कि उनसे गलती हो गई. At least on a very bigger platform, they cannot afford to accept this mistake. So they need a shoulder to rely on कि भाई अब ये blame डाल देते हैं. It's okay. It won't impact your career. We will make sure. They will make sure of it, but they will still blame you for it. Right? When you have the expectations of a family, you will be like यार मैंने तो गलती की भी नहीं थी. Why are you blaming me? You will get hurt. So number one rule: never make a family in your corporate life. It's not your family. It's just professional life. Have professional Right. relationship and you will be sorted. You will literally be sorted. So इसमें ना एक और बात है कि फैमिली क्यों नहीं बनानी चाहिए. उसका एक और रीजन ये भी है कि you do not put lot of pressure on your family. You won't ask your family to pull an all-nighter. You will try to do all the things from their on their behalf कि चलो तुमसे नहीं हो रहा है हम कर देते हैं. But in corporate culture, you have to learn things. You have to be very proficient in whatever you are doing. So in order to learn, in order for you to grow, कि तुम्हारी learnings जरा नहीं रुक जाए,
फैमिली मत बनाओ, फैमिली बनाया, आप कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल होते ही आपने अपनी लर्निंग्स रोक दी, नाउ यू आर इन दी जोन की अरे हो जाएगा, बट व्हेन यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल यू फील लाइक अरे आई हैव टू डू इट टुडे, यू हैव दैट प्रेशर ऑफ लर्निंग, सो इट इज गुड फॉर योर ओन लर्निंग एज वेल कि ज्यादा कंफर्टेबल कंफर्टेबल हो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप लर्निंग्स ही रोक दो अपनी. देयर इज दिस वेरी वेरी नाइस poem, I don't remember the name of the person, लेकिन हम सबने पढ़ी है बचपन में, that the woods are dark and deep and I have promises to keep, miles to go before I sleep, miles to go Yes, before I sleep. That's the mantra I go by कि right. रुक ही नहीं सकती, you can't stop कहीं पर भी, you can't get comfortable, you can't stop your learning, you can't do it, you have to continuously do something and something and something. Absolutely. This a ये जो poem है, I think it's written by Robert Frost, if I'm not wrong, Yes, yes, and yes, we have mostly studied it in our English literature, and it has a much deeper meaning that now I can recollect and I can relate it very nicely. So definitely, once we have that comfortable level set कि भाई नहीं हो जाएगा, we don't push ourselves also that yeah, I need to do this, I need to learn this, I need to get one step higher, and we tend to stay on the same level, फिर चाहे वो 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए. So I think it is sometimes getting uncomfortable is much important for self growth as well. So that is a very important lesson or learning that you have told. So definitely, another thing that comes you have shared about is toxicity. So maybe can you share some practical strategies or maybe communication techniques you have used to protect your peace and stay productive in a difficult environment? so I learned this very hard way. I'm a person who cannot say no. If you come to me and you'll ask for something, I'll be like, fine, I'll do it. Even though I don't know how to do it. Even Yes, I don't want to do it. Let's say. I would yes, be like, okay, you coming and asking me for it, I'll do it. Now I will go home, I'll do my research, I'll put in extra efforts to understand the topic, to understand the subject, and then I will come and deliver that thing to you. Hey Bhargavi, we have done this for you. And I won't even expect anything in return from you. I'll be like, okay, she asked me, I did it, no big deal. And that was my weakest point, honestly. I did not know how to say no, and I suffered a lot because of that. Every task which was not related to my work, which was not related to my field, I used to take that up. If somebody comes and give me, I'll be like, oh, okay, fine, I'll do it. I never had the strength to say it out loud that this is not my task. I should not be doing it. I never had that strength. I never even realized that I can say no. As a fresher, I thought that whatever comes your way, you have to take it. yeah, I had no yeah, idea that I have the power to say no. That this is not my task. Don't give me this task. But then I realized, I learned that you can always say no. You can't just directly say no. You have to be very manipulative while saying no. okay, So now right, that's how you can say no. Technique number one. Always tell this that this person, whoever this task is related to, tell them that this person or this team will do this task in a very efficient and very better way. That is a diversion technique. And that's truth also. Because they will be, if they are doing it, they will be doing a very good job. Right? So that's truth as well. You just have to divert that if this is done by them, they will do it even efficiently and in a very better way, and you will get the results in less time. The tat will be less, but when you will be doing it yourself, you'll have to do a lot of things and it will take a much more time for you. So that is diversion technique. Number two is, first we talked about how you can divert. Number two is, let's say you want to do the task and you don't feel like diverting, or even if you don't want to do the task and you can't even divert this, what you can say actually in that moment is, you have to emphasize on the ROI. Every company, every corporate, or every business, the final goal is ROI. Whatever you are investing, you have to get that return, right? So yeah, the business, the companies, they are built for the ROIs only. Now emphasize on this point that I currently have this task, and this task
is actually having this much of ROI. This will Yes. help in this much of ROI, and this will contribute somewhere. On the other hand, if I take this task which you are giving me right now, Yes. I might not be able to focus too much onto it Yes. simultaneously. और लाइक यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि अगर ये इंपॉर्टेंट है पहले वाला, तो इफ आई टेक दिस टास्क आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द फर्स्ट टास्क एंड दैट विल इम्पैक्ट द आरओआई. इफ सेकंड वन इज मोर Yes. इंपॉर्टेंट व्हिच यू आर गेटिंग राइट नाउ, यू कैन से कि अगर मैंने ये टास्क ले लिया अभी, तो मैं अभी इतनी प्रिपेयर्ड हूँ ही नहीं, मैं उस माइंडसेट में ही नहीं हूँ कि मैं उसको अपना पूरा अटेंशन दूं, तो जो हमें Correct. एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट वो नहीं आएंगे. तो इधर गिव मी timeline, either give me थोड़ा सा odd number of days. Don't give me 7 days. Give me 15 days and I'll do it in a very better Right. and efficient way. So in that way, you have Correct. gained your time. You have Yes. gained one strategy. कि अब अच्छा, you have 15 days. Now you can learn also, you can implement also, and you can deliver also. Absolutely. Right. So either you can divert कि भाई किसी और को दे दो, this is not related to me. Second, you can emphasize on the ROI कि कौन सा important ज़्यादा है, किसकी priority ज़्यादा आपको रखनी चाहिए. You can analyze when you do certain things. You can analyze कि भाई ये important है, ये important है. If the second task is less important, you can always ask कि भाई टीम में और भी लोग हैं, आप उनको दे दो. But don't say it Correct. directly. Always say that I have this thing and it is on priority. Let them Right. say. Point number one is always try to divert the situation. When you feel like that this is not your task, be very upfront in such a manner that you are not saying कि आपको नहीं आता, but you are saying कि दूसरे को बहुत अच्छे से आता है. Never say कि you don't know the task. Always say that person knows better than you. Why to reinvent the wheel? जब किसी ने invent कर रखा है, उसको use करते हैं ना. Invention क्यों करना है वापस? So that is point number one. Point number two is और emphasize. सामने वाले को बताओ आपके पास ये टास्क चल रहे हैं और इस टास्क पे इतनी आरओआई आ रही है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है. आप मना मत करो. Why you have to go and tell them no? If you know you are the negative person, they will feel कि अरे यार ये तो ना बोल दे, इसको कुछ भी काम दो, इसको काम करना ही नहीं है. She will always say no. Don't be that person. Don't go and say no. Always say that you have these things on priority and this is the Priority. ROI that you are expecting from the start. Right. Right. Now Right. let the other person decide कि अरे हाँ, this she is right. Let's not disturb her. Let's give this thing to someone else. Let other person make other person say no. Be very smart to make other person say no. And point number 3 Definitely. है कि अब चलो ये भी काम नहीं कर रहा कि सामने वाला भी मना नहीं कर पा रहा, आप भी मना नहीं कर पा रहे हो. Now what? Now what you will actually do? इस time what you can do is you can always ask कि इस चीज को बहुत एफिशिएंट और बहुत बेटर वे में करने के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए. डिमांड मोर टाइम. टेल देम कि ये टास्क ना इतना इंपॉर्टेंट है जो आपने मुझे अभी दिया है. दिस सेकंड टास्क व्हिच यू आर गिविंग मी राइट नाउ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ एफर्ट. इफ आई ट्राई टू डू इट इन 7 days, आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस to the task. Make them understand कि इसमें depth कितनी है, levels कितने हैं, because you are the technical person, they are not, right? Always play around. Never accept anything on a less duration. Always say कि मुझे ना इसको बहुत एफर्ट्स देने हैं, बहुत अटेंशन देनी है टू रीच दैट लेवल. अगर मैं नहीं दूंगी, वी वोंट बी रीचिंग दैट लेवल और हमारे वो 7 days भी जो हमने एफर्ट्स डाले वो बिल्कुल वर्थ नहीं होंगे. तो ऑलवेज हैव एक्स्ट्रा टाइम इफ यू हैव टू डू इट. दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली प्लान. This is a very important tip or suggestion for me as a person, because I have realized some of the mistakes that I have been also committing, and this is really going to help me. So of course, the people watching this, of course, this the really the tips that you're sharing, those are like a perfect blend of psychological and logical perspectives to deal with the situation. So that is amazing. So Heenal, like you work as a data scientist. So we have a lot of people who would be tech aspirants or someone who would want to go into this field of career. So what are your views on data science as a field, and how does your work look like? What do you work on? What kind of data sets do you work on? What kind of major skills do you use in your regular job? And any tips that you would like to give to students or aspirants who are looking forward to come into data science? आपने सुना होगा कि बीच में एक बूम आया था
इंजीनियरिंग का। एवरीबडी वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। क्यों? Yes. पता नहीं, मे बी हाई पेइंग जॉब है इसलिए, या फिर सब कर रहे हैं, शर्मा जी का बेटा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। मे बी दैट्स द रीजन, प्रोबेबली, यू डोंट Yeah. नो। तो वैसे ही अभी जो टाइम है ना, ये बूम टाइम है फॉर डेटा साइंटिस्ट। हर किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है। क्यों? हमें नहीं पता। So the first step towards becoming a data scientist is ask yourself, क्यों बनना है? शर्मा जी का बेटा बन रहा है इसलिए बनना है, या फिर actually you have to be in the field? अच्छी पेइंग जॉब चाहिए इसलिए बनना है, या फिर you actually want to be in the field? This is a very important why to discover. Once you have the answer to this why, कि आपको data scientist क्यों बनना है, the path becomes very easy for you. If you don't have the answer, let's say कि आपने journal किया, you tried talking self introspective, कि हम खुद से पूछ रहे हैं कि क्यों बनना है, क्या करना है, हमने डिस्कस किया, सब किया खुद से, सेल्फ टॉक। अगर आपको आंसर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स यू शुड एंड यू मस्ट गो इन दिस फील्ड। डेफिनेटली आई विल शो द पाथवे ऑल्सो, बट अगर आपको यहाँ पर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो इट्स ए रेड अलर्ट। रुक जाओ, टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, ट्रिप पे निकल जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जल्दबाजी करके डेटा साइंटिस्ट बनने का फैसला मत लो। डोंट हैव टू Declutter, गो as एंड you इन्वॉल्व। said. Declutter, yeah, declutter. That is very very important. So first have your why clear, कि क्यों बनना है data scientist. Once you have the answer to your why, then second comes how, कैसे बनेंगे, what are the ways. So now second what you have to do is you have to discuss to the data scientist in your knowledge, जो आपके करीबी हैं या फिर जिनको आप फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से, उनसे हमेशा डिस्कस करो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग फील्ड। हर कुछ महीने में कुछ नया आ रहा है, यू नो राइट। तो जो Yes, कंसिस्टेंसी yes. है ना, कि आप एक ही टाइम एक ही चीज का एक ही टाइप का काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग वही चलता रहे। रोज कुछ नया आ रहा है मार्केट में और रोज एक Correct. नई ग्रोथ हो रही है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क पीपल कि अभी क्या चल रहा है और अलग अलग डोमेन्स में क्या चल रहा है। तो डेटा साइंटिस्ट एक ऐसा फील्ड है जो हर एक डोमेन में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। डेटा इज द फ्यूचर, Interdisciplinary. जैसा लोग कहते हैं कि डेटा ही फ्यूचर है, बिकॉज अब तो सब कुछ एआई कर रहा है इसके अलावा। तो Yes, डेटा इज द yes. ओनली फ्यूचर नाउ। तो डेटा भी हर फील्ड में अवेलेबल है। नाउ सॉर्ट द फील्ड्स कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। हैव अ लिस्ट कि मेरे को बीएफएसआई में जाना है, मेरे को हॉस्पिटैलिटी में जाना है, विच फील्ड यू आर इंटरेस्टेड। क्योंकि आप जिस फील्ड में जाते हो, डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंस इन इटसेल्फ इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ डेटा और the derivations from the data. It's more about how you can benefit the business from this data, how you can solve the business problems from this data, how you can actually market the company from this data. तो ये डेटा से जुड़ी हुई वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ पे ले जा सकती है, साथ ही उसको आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो आप बिजनेस को कब हेल्प कर पाओगे? व्हेन यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ बिजनेस। सो द Yes, काइंड ऑफ yes. फील्ड यू चूज मैटर्स अ लॉट। इफ यू आर इनटू हॉस्पिटैलिटी, गो फॉर डेटा साइंस इन हॉस्पिटैलिटी इटसेल्फ, क्योंकि आपको पता है इस फील्ड में क्या होता है, लोगों को क्या चाहिए हॉस्पिटैलिटी में, उनको कौन सा लग्जरी चाहिए, उनको किस टाइप का बिहेवियर चाहिए अपने लोगों से। दे नो एवरीथिंग, राइट? So always choose a field. If you are into finance, go into BFSI. Whatever you are into. If you are into technology, go into IT. Whatever you are into, likewise आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो when you are Correct. studying about data science, जब आप डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, या जो भी स्टडी ऑफ फील्ड आपका है, जहां पर भी आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो, मेक श्योर टू हैव दी क्लैरिटी कि आपको इस डोमेन में या इस फील्ड में जाना है बाद में इन जॉब, राइट? और parallelly, while studying about data science, you should also study about that field. Correct. So that when you go in that, when you do your first job in that field, आप fresher नहीं हो वहाँ पे. Now you have the knowledge. You might be fresher in terms of experience and everything, but in terms of knowledge, you are not a fresher anymore. You know everything about the culture, you know everything about the domain, you know everything about what is the market expectancy from this field, right? Got it. Yeah. So So that domain knowledge is very important. very If you're important. Data knowledge is not that important because अगर आपको उस डोमेन का पता ही नहीं है, आप क्या करोगे डेटा? Let's say I tell you that I have X number of customers in X number of in this field. What will you do with this data if you don't have any knowledge of my field? You can't do a single thing. If I say that I have a dance studio and I have 5,000 people coming in and I want to increase my sales with this number, you might be able to give me a very generic answer कि हिंदुल अपन ऐसा कर सकते हैं, and it might give you some audience, it might give you some customers.
बट दैट विल बी अ वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट. मैं किसी भी डेटा साइंटिस्ट को पूछूंगी ना, वो मुझे सेम नंबर और सेम आंसर देगा. हाउ विल यू स्टैंड आउट? फॉर यू टू स्टैंड आउट, यू शुड have the Yes. knowledge of my domain कि ही ना डांसर्स ना ये चीज प्रेफर करते हैं. Why don't you do something here? और वो नॉलेज के साथ ही you can guide me. How will you get a job? How will you stand out? Is your knowledge of the domain, not data science. Data science is just ऊपर ऊपर का चीज की जो आना चाहिए, जो सबको आ रहा है, जो सब पढ़ रहे हैं, because it's boom. Everybody is becoming an engineer. Everybody is becoming a data scientist. Yes. You will have to stand. We'll have to do something to give ourselves that extra edge, what people are not Correct. studying or what people are not doing. करेक्ट करेक्ट. हम लोग को लगता है कि हमने डेटा साइंस पढ़ लिया, हमने एनएलपी पढ़ लिया, डीप लर्निंग पढ़ लिया, जेन एआई पढ़ लिया, हमने प्रोजेक्ट्स कर लिए, तो हमने एक्सेल कर लिया करियर में, और हम तो बस एकदम हाई पेइंग जॉब लेकर मस्त लाइफ में मजे करेंगे. लाइफ डज नॉट एंड देयर. जॉब लगने के बाद द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स. जब आपको डोमेन का नॉलेज ही नहीं होता है, तो यू हैव टू पुट इन सो मच एफर्ट्स टू लर्न अबाउट द डोमेन. और कंपनी या किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपको उनके डोमेन का बहुत सारा नॉलेज वो बिठा कर दे सके. ऐसे नहीं बोलेगा कोई भी कि आओ बैठो मैं सिखाता हूँ बिजनेस. नोबडी विल डू दैट, राइट? यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ. तो अभी when you don't have any responsibilities, when you don't have much pressure on yourself, this is the time when actually you can read about the multiple domains and understand कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आप किधर जाना चाहते हो. That will help you a lot. क्योंकि बाद में when you start, बहुत वर्क प्रेशर है. यू डोंट हैव टाइम कि आप डोमेन के बारे में पढ़ो, आप Of उनके course. स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ो. यू कैन डू दैट, Right. राइट? दिस इज वेरी Right. इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट फिगर आउट व्हाई, सेकंड फिगर आउट हाउ. हाउ के साथ में आपने डोमेन भी फिक्स कर लिया कि चलो ये 3-4 डोमेन है. ऑलवेज हैव ऑप्शन बी. तो एक के साथ मत जाओ. ऑलवेज हैव 3-4 ऑप्शंस रेडी विथ यू कि दिस नहीं, इधर दिस और दैट और दिस. लाइक हैव मल्टीपल ऑप्शंस, और उन सब के बारे में एक बहुत अच्छा, बहुत इंप्रेसिव नॉलेज आपको होना चाहिए. पॉइंट नंबर 3, whenever you are going for an interview, सामने वाला ना ये नहीं देखता कि आप डेटा साइंस फील्ड में क्या कर सकते हो. मतलब दैट इज ऑल्सो वेरी प्राइमरी एंड वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए. यू हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग इन डेटा साइंस ऑब्वियसली, क्योंकि टेक्निकल राउंड तो उसी का ही होगा पूरा. लेकिन जो मेन आपका हेड है, एचओडी भी आपका एक राउंड लेता है. इफ यू आर अवेयर, एक राउंड एचओडी भी लेता है जस्ट टू सी कि कैंडिडेट कैसा है. वो आपकी स्किल्स टेस्ट नहीं करता. दैट पर्सन जस्ट सी कि कैंडिडेट है कैसा, इस कंपनी के लायक भी है या नहीं है. सीनियर्स एक राउंड हमेशा लेते हैं. एंड वो राउंड पता है क्यों लिया जाता है? हमें लगता है कि वो हमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी स्किल देखेंगे, या फिर पता नहीं क्या करेंगे. वो राउंड लिया जाता है ये देखने के लिए कि बंदा इस कंपनी में सरवाइव करने की नॉलेज रखता है या नहीं रखता है. अगर नॉलेज नहीं रखता है तो एटीट्यूड रखता है या नहीं रखता है. क्या चाहिए? इधर यू हैव द नॉलेज कि ठीक है मुझे आता है, Or the attitude to. और द एटीट्यूड ऑफ द लर्निंग कि नहीं आता है पर सीख जाएंगे. और वो Yes. आपके बिहेवियर में दिखता है. दे डोंट आस्क यू क्वेश्चंस बिकॉज दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड. दे नेवर आस्क यू क्वेश्चंस. दे विल पुट यू इन अ सिनेरियो एंड यू विल हैव टू कम आउट ऑफ इट. They will just give you a scenario and you'll have to come out of it. That's it. That's the final round. और वो सबसे important round होता है. Everybody can clear technical round, but clearing this round itself means a lot. So when you have the domain knowledge, when you have the market knowledge, when you have the knowledge of this psychological thing in a corporate world, कि how the psychology works, या फिर how the mentality works, you can actually come out of any scenario. Like what you have told is something that no one tells out there. I have seen a lot of podcasts on data science also. Everyone is talking about learn SQL, learn this, learn that, whatever the basic tools are there, learn that. But what you have shared is something that no one tells, that what is actually needed and what will give you an extra edge. So definitely really really thankful for that. And maybe like you told that we need to be sound with the basic technical things that are there in data science, like some basic deep learning, gen AI projects or anything like that. So for a student who is okay, so one thing is domain knowledge to make plan A, plan B, plan C, that what domain you are targeting. Then for a person to get idea of the technical things, so can you just maybe briefly summarize what technical things should a student who is maybe a college student or someone from a non-tech background, what technical aspects should they focus on,
And as you also told that you were not from a proper data science background, but you did a course on data science. So maybe would you suggest a course like that to jump into this field? So maybe you can just focus on the technical aspect of what students should focus on who are aspiring to become a data scientist. So, basically, to become a data scientist, first you have to understand data. That is the foundation. To understand the data, you have to have a basic knowledge of Excel. You should and you must know Excel. People will say कि यार Excel बहुत outdated है, नहीं मतलब अब क्या ही करोगे, AI का जमाना है, नहीं आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट दैट इज द सिंपलेस्ट टूल टू लर्न, और उसमें आप सब कर सकते हो. इट्स वेरी एडवांस एज वेल, लेकिन वो बहुत सिंपल भी है, इजी टू यूज, बहुत यूजर फ्रेंडली है, राइट? तो यू डोंट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, पर उससे डेटा समझना इज वेरी इजी. इंस्टेड ऑफ पाइथन, सीक्वल और एनी अदर लैंग्वेज, किसी से भी डेटा समझना माइट नॉट बी इजी, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोड ऑल्सो. फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू राइट अ कोड, हाउ टू डू. बट इन एक्सेल यू कैन डू एवरीथिंग मैन्युअली. जब आप बहुत फ्रेशर हो, एकदम नए हो, आपको कुछ नहीं पता है, आपको एबीसीडी भी नहीं पता है, तो आप एकदम से तो कोड करने नहीं लग जाओगे, एकदम से तो एकदम वाव लेवल चीजें, एल्गोरिथम्स तो नहीं बनाने लग जाओगे. बेसिक इज नो एक्सेल. दैट इज योर फाउंडेशन. ऑलवेज हैव योर फाउंडेशन क्लियर. आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए. आपका जब फाउंडेशन क्लियर होता है ना, आपको याद है हम सब ने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है. डू यू नो व्हाट इज द रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? हमने क्यों पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैसे? Very less people actually know, like somewhere it is used in aeronautics, or where exactly it is used. We tend to focus very less on the applications. एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं था, और हमने बस ऐसे ही पढ़ लिया. मे बी जब हम थोड़े से बड़े हुए तब हमने सीखा कि अच्छा यहाँ पर यूज हुआ, लेकिन दैट्स नॉट आवर फील्ड, तो हमने कभी फोकस इतना दिया भी नहीं उस चीज पर. तो जैसे हमें पता ही नहीं है कि हम कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तब तक हम उसको बहुत अच्छे से नहीं, even though we can learn the formulas and we can do all the calculus, derivatives, everything around that, सब कर लेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अराउंड, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं. What is the real life implementation? तो कभी भी ना वो ग्रिप नहीं आ पाएगी. When you have very high level question, आप रिजॉल्व नहीं कर, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उसको, because you don't know the basics. So in data Right. also, knowing the basic is very important. और बेसिक Yes. को पढ़ने के लिए कभी भी हाई लेवल चीजें मत. Right. सिंप्लिसिटी इज द की. ऑलवेज ट्राई टू लर्न इट सिंपली, कि एकदम सरल भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेटा क्या होता है, डेटा कैसे होता है, डेटा में कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो. तो एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू लर्न अबाउट डेटा इन द सिंपलेस्ट मैनर. करेक्ट? Right. दैट Right. पॉइंट नंबर 1. नो एक्सेल. हाई लेवल, एडवांस लेवल आने की जरूरत नहीं है. सिंपल लेवल, नॉर्मल लेवल आने की जरूरत है, ताकि आप चीजों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सको और समझ सको. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज सीक्वल. सीक्वल भाई सबसे सिंपल लैंग्वेज है. फॉर मी, आई बिलीव कि सीक्वल सबसे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज बनाई गई है. उससे ज्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं दुनिया में. कुछ भी कर सकते हो आप सीक्वल से, एंड यू डोंट इवन हैव टू पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स. लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस, लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स, वेरी Yes. सिंपल. आप सिंटेक्स भी याद रख सकते हो, आपको कुछ दिक्कत है ही नहीं. सबसे इजी है. सीक्वल आपको आनी चाहिए, एंड सीक्वल विल नॉट ओनली हेल्प यू इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द डेटा, लेकिन सीक्वल में आप डैशबोर्ड्स भी बना सकते हो, उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं. तो इट इज वेरी वेरी सिंपलेस्ट एंड वेरी डेवलपर फ्रेंडली. जो दूसरे टूल्स हैं जहाँ पे हम डैशबोर्डिंग करते हैं, लाइक पावर बीआई, टैबल्यू, they are the Yes. tools जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो. यू डोंट नो द बेसिक नाउ कि पीछे Right. बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. बैकग्राउंड जानने के लिए सीक्वल होनी चाहिए. इफ यू सीक्वल, आप पावर बीआई और टैबल्यू का बैकग्राउंड पता है कि आपने जो ड्रैग किया उसका मतलब क्या था, राइट? सो टू बी एबल टू डू द ड्रैग एंड ड्रॉप कोई भी कर सकता है. मैं आपको सिखाऊं आज, इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, और मैं आपको बोलूं कि पावर बीआई मैं आपको सिखा रही हूँ, यू कैन लर्न इन 1 डे. क्या डिफिकल्ट है? ड्रैग एंड ड्रॉप पे तो करना है, सारे चार्ट्स ऐसे ला के कलर ही तो करना है. नथिंग डिफिकल्ट, राइट? लेकिन इफ आई आस्क यू कि चलो आपने ये बना लिया, नाउ टेल मी व्हाट गोज ऑन बिहाइंड, यू माइट नॉट बी एबल टू टेल मी, क्योंकि मैंने एक दिन में Yes. सिखाया है आपको. But if I Right. start teaching you SQL, and then I teach you this drag and drop, now you know कि background में क्या चल रहा है. So have the Correct. foundations clear. Excel, SQL, must learn at any. UPS तो आनी चाहिए, मतलब UPS के फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेरे को C आ रही है, C++ आ रही है,
I'm not asking you to read or learn these languages. I'm just asking you to have the clear knowledge of oops कि भाई होता क्या है, क्यों होता है, so that you can build your logics. Whenever you write a code, आपको logic clear होना चाहिए. Syntax अगर आपको नहीं भी आ रहा है, let's say you are a coder, you are a developer and you forgot the syntax. You have Google, you have ChatGPT, you have Gemini, you have Copilot, you have n number of platforms where you can just go and ask कि भाई इसका syntax क्या है, and they will give you the syntax, right? So if you don't remember syntax, completely fine. You should remember, you should learn, you must. But in case you forget, no big deal. You can always go and ask, and someone will tell you. Some of these platforms will tell you, all of these platforms will tell you, right? But no one will tell you the logic to solve a problem. Logic you will have to build on your own, because every problem is a unique problem. Every project you do is a unique project. आपको जब तक वो project उस platform पर है ही नहीं, उसकी training उस AI model को मिली ही नहीं है, they might not be able to guide you in a very good way, right? Creative ideas के लिए ना AI पर depend नहीं होते कभी भी. वो Very true. creativity खुद करते हैं. We have to do it Yes. ourselves to have that logic clear. तो जब oops क्लियर होगा, जब आपका फाउंडेशन एक्सेल और सीक्वल ये 3 चीजें आपकी क्लियर होंगी ना, तो आपको लॉजिक्स लिखने आ जाएंगे. ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे 4 पार्ट में तोड़ेंगे एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन. When you have a pathway to the solution, now you can do the code. And now Right. failure chances of your code is very less. क्योंकि आपने Yes. पेपर वर्क कर लिया, आपने अपने माइंड को मेक कर लिया कि ये तरीके थे, यहाँ पर ये on paper you can have multiple scenarios. Scenario number 1, अगर मैं ये वाला pathway follow करती हूँ, this will be the result. Scenario number 2, this pathway if I follow, this will be the result. Now test the scenarios in Excel. Create a dummy data set of let's say just 5 rows. क्यों करनी है ज्यादा? 5 rows, 3 fields. बहुत simple छोटा सेट बनाया, Excel पे सारे scenario टेस्ट कर लिए, रिजल्ट चेक कर लिया. How simple and how easy, right? Right. कोड Right. कोड चेक करना है तो आपने डेटाबेस में ही एक टेबल क्रिएट कर ली सीक्वल के अंदर. क्रिएट अ टेबल, अ डमी टेबल and test the scenario there. So SQL and Excel will help you in pre-testing the scenarios before you actually do the coding in Python, R or whatever language you are using. तो सीधा वहां पर हल्ला बोल करने से पहले इधर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. Right. और Right. इधर क्लैरिटी के लिए पेन पेपर या फिर वो प्लेटफॉर्म जो आपको कॉन्फिडेंस दे, वो होना बहुत जरूरी है. और वो होता है हमेशा एक सिंपल चीज. कभी भी उसको Very true. कॉम्प्लिकेट नहीं करते. Absolutely. Very true. देयर इज दिस वन थिंग व्हिच माय सीडीओ यूज्ड टू से, आज भी बोलते हैं वो, कि कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल मत करो. इफ इट इज कॉम्प्लेक्स, से कि ये कॉम्प्लेक्स है और उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से ही डील करो. नेवर मेक इट सिंपल. और अगर कोई सिंपल चीज है, डोंट कॉम्प्लेक्स इट. Yeah. It is simple. Do it simply. Why you have to do? अगर आपको Correct. कान सीधा पकड़ना है, कान ही तो पकड़ना है ना, तो होल्ड इट लाइक दिस ना. ऐसे घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है? सिंपल है, सिंपल करो ना. कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? और अगर कॉम्प्लेक्स ही है, Very true. don't try to simplify. Then Very deal with it in a complex way only. So this is Absolutely. very one important learning कि सब कुछ वाव दिखाने के चक्कर में हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. हमें लगता है कि अगर वाव दिखाया तो अच्छा लगेगा. Nobody wants अच्छा लगना. Everybody want result. Every business, Absolutely. every company, उनको result से मतलब. Now if we are getting that graph through let's say matplotlib या ऐसे कोई library से मिल रहा है या फिर हमें वही pie chart अगर हमें simple excel से मिल रहा है, so we are just concerned with the result and the interpretation that is there. So of course Exactly. that is One very important thing is when you have to use this libraries. जैसे आपने बोला matplotlib. अब मैं ये कब यूज करूंगी? जब मुझे कुछ चीज ऑटोमेट करनी है. अगर मुझे वो चीज, वो ग्राफ मुझे एवरी 10 मिनट्स देखना है विथ डेटा जो हर 10 मिनट में रिफ्रेश हो रहा है, आई वॉन्ट बी यूजिंग एक्सेल ना, क्योंकि मेरा एक्सेल तो कनेक्टेड ही नहीं है उस डेटाबेस से. फिर मैं बार बार थोड़ी डाउनलोड करूंगी डेटा एक्सेल में और बार बार तो जाके रिफ्रेश तो नहीं करूंगी. तो वहां पर Yes. एक्सेल fruitful नहीं है. वहां पर तो आपको मैटप्लॉटलिब ही यूज करना पड़ेगा. वहां पे आपको Yeah. पाइथन को ही कनेक्ट करना पड़ेगा डेटा सेट से. लेकिन एक्सेल आपकी हेल्पफुल Definitely. कहाँ थी? उस चार्ट को विजुलाइज करने में कि दिखेगा कैसे Visualize. बनने. प्री टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी डेवलप करने से पहले जो हम प्री टेस्टिंग कर रहे हैं, वो प्री Right. टेस्टिंग के लिए आपको एक्सेल हेल्पफुल रहेगी. बाद में तो आपको Absolutely. ऑटोमेट करना ही पड़ेगा. दैट इज Correct. अ मस्ट थिंग यू शुड डू.
एज अ डेटा साइंटिस्ट, वरना क्या फायदा डेटा साइंटिस्ट बनने का जब एक्सेल में ही करना है सारा काम. Yes, definitely, definitely. So from what you said, the basic tools, like we should start the basics from Excel, SQL, Oops. So what languages you prefer, like Python, R? So these are the languages in which we should go I for that. I Yeah. personally prefer Python myself क्योंकि बहुत सिंपल है. Yes. It's just like you are talking to someone in English. Yes. No syntax, nothing. It's very simple and very easy to understand. So Correct. I personally prefer, my preference is Python. लेकिन it's up to you कि आपका preference और आपका confidence किसके अंदर आ. Does not matter if you are going with Python or if you are going with R. Right. बहुत ज़्यादा similarity है दोनों के बीच में और दोनों ही widely accepted हैं हर जगह पे. Right. करेक्ट. तो Yes. लैंग्वेज यहाँ पर मैटर नहीं करती. अब मैटर करते हैं आपके डेटा फ्रेम्स, आपकी चीजें जो आप आगे पढ़ने वाले हो. करेक्ट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा फ्रेम्स और व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडल्स, द एल्गोरिदम्स, यहाँ पर ना एज अ स्टूडेंट जो गलती हम करते हैं वो गलती ये होती है कि हम लोग एल्गोरिदम्स पढ़ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये एल्गोरिदम है, इसको ऐसे यूज करते हैं एंड दैट्स इट. हमने कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए, हमें पता है कि प्रोजेक्ट्स का डेटा सेट यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से हमने कैगल से हमने उठा लिया, गिटहब से हमने उठा लिया, कुछ हमने सर्टेन 3-4 मॉडल अप्लाई कर लिए, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है उसको हमने यूज कर लिया, उस मॉडल को हमने फाइनलाइज डिप्लॉय कर लिया. ठीक है, यही करते हैं हम. हमें ये पता ही नहीं है कि कौन से टाइप की प्रॉब्लम के लिए कौन से टाइप का मॉडल यूज करना चाहिए. दैट इज Yes. वेरी बेसिक. अगेन बेसिक आर वेरी. तो फॉर यू टू स्टैंड आउट आपको वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है. वो नॉलेज भी कहाँ से आएगा कि सिर्फ मॉडल्स मत पढ़ो, सिर्फ एल्गोरिदम्स मत पढ़ो, या फिर सिर्फ डेटा फ्रेम्स को पढ़ो मत. उनका बेसिक समझो कि वो डेटा फ्रेम बना क्यों है या फिर वो एल्गोरिदम बनी क्यों है, उसको यूज करने के पीछे लॉजिक क्या था. अब आप कैसे पढ़ोगे, किसी बुक में नहीं आएगा, आपके कोर्स में आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है. ऑलवेज गो टू द रिसर्च पेपर्स जहां पर वो एल्गोरिदम पहले से पब्लिश हुई. Right. हर एल्गोरिदम कहीं ना कहीं किसी ने इन्वेंट करी है और उसने कहीं ना कहीं किसी पेपर में पब्लिश करी है. ऑलवेज ट्राई टू रीड दैट पेपर. वंस यू रीड दैट पेपर आपको ये समझ आएगा कि उसके पास कौन सी सिनेरियो थी. मतलब जैसे न्यूटन का लॉ जो था ग्रेविटेशन वाला, एप्पल गिरा, हमको वो स्टोरी पता है ना कि एप्पल गिरा और उसने लॉ डिस्कवर किया. सिमिलरली इन डेटा साइंस ऑल्सो यू शुड नो कि ये वाला एल्गोरिदम कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे Right. इन्वेंट हुआ, Right. उसके पीछे की स्टोरी क्या है. भले ही वो एप्पल गिरने जितनी स्टोरी हो या कोई भी स्टोरी हो, बोट में बैठ के Yes. कोई कहीं जा रहा है, बहुत सिंपल सी स्टोरी, डज नॉट मैटर. बट व्हेन यू नो द स्टोरी यू कैन रिलेट इन एवरी सिचुएशन Definitely. कि अरे Definitely. ये स्टोरी थी, इस स्टोरी से ये इन्वेंट किया था, इसने ऐसे इन्वेंट किया था, ये वाले मैथमेटिकल लॉजिक्स उसने यूज किए थे और ये स्टैट्स उसने लगाई थी, एंड दैट्स हाउ दिस एल्गोरिदम गॉट बिल्ड. राइट नाउ यू नो द स्टोरी. अब आपके सामने कभी भी वो प्रॉब्लम आएगी, यू कैन ऑलवेज रिलेट कि इस टाइप की प्रॉब्लम में ये वाली एल्गोरिदम यूज करते हैं. Absolutely. Absolutely. तो ऑलवेज हैव दिस स्टोरी टेलिंग इन योर हेड. हम लोग Right. बहुत फैसिनेटिंग टर्म्स पढ़ लेते हैं, बहुत फैसिनेटिंग लाइफस्टाइल जीने की कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि स्टोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और स्टोरीज हम Absolutely. कभी नहीं भूलते. आई कैन फॉरगेट नेम ऑफ द एल्गोरिदम, आई कैन फॉरगेट हु इन्वेंटेड द एल्गोरिदम, आई कैन फॉरगेट द फॉर्मूला, आई कैन फॉरगेट Yes. एवरीथिंग. आई विल नेवर फॉरगेट कि Forget the story. एप्पल गिरा था and that's how gravity was discovered. Definitely. Story you Definitely. will never forget. So Definitely. And also, like, the way you're explaining why things are important, um, uh, as a data science aspirant also, it is making things so clear for me. And I'm getting more clarity that, yeah, why people talk about reading research papers. Now I get that, okay, yeah, we need to know the story of where this thing came from, so that we can easily relate this with that thing. So absolutely, like, these insights are really helpful for a student or even someone who is properly, like, I'm also doing an internship right now. So anyone who is working or a student, anyone who is looking forward to this field, I think this should be the right attitude to proceed ahead and to gain the proper clarity of how things are there. So that is the thing. there's another misconception जो मैंने भी किया था
एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैंने सोचा था कि सब पढ़ लेते हैं, इफ आई नो एवरीथिंग आई विल डेफिनेटली पास एनी इंटरव्यू। ऐसा नहीं करना होता है। यू शुड नॉट, जरूरी नहीं है कि आपको सब पता हो। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो एवरी सिंगल थिंग। व्हाट्स नेसेसरी इज कितना क्लियरली और कितना डेप्थ में आपको वो चीजें पता है जो आपको पता है। लेट्स से देयर आर 10 टॉपिक्स इन योर कोर्स, यू शुड अंडरस्टैंड द 10 टॉपिक्स ऑन अ एवरेज लेवल, कि पता है टॉपिक्स के बारे में। कोई पूछेगा तो मैं एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तो बोल ही सकती हूँ इस टॉपिक के बारे में। लेकिन यू शुड हैव 6 to 7 और एटलीस्ट 5 टॉपिक्स ऐसे कि आप उनके साथ उनके बारे में 2-2 घंटे बात कर सको। इफ आई आस्क यू अबाउट एन एल्गोरिदम, ठीक है, वेरी बेसिक, कि मेरे को ना रैंडम फॉरेस्ट बताओ, चलो, तो एज ए स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट आप उठा लोगे ना तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बोल पाएगा उस एल्गोरिदम के बारे में, और वो भी सब कुछ वही जो सिलेबस में लिखा हुआ है। Absolutely, कि absolutely. करेक्ट, इसमें ये सब चीजें होती हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं, ये मैथमेटिक्स यूज हुई है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। मैक्सिमम 10 मिनट्स अ स्टूडेंट कैन स्पीक अबाउट इट। इवन मी, इवन माई सेल्फ, अगर मैं खुद को आज से 3 साल पहले रखती हूँ ना तो मैं भी नहीं बोल पाती, क्योंकि मैंने भी उसी तरीके से उसी हिसाब से वो चीजें पढ़ी थी जैसे आप सब पढ़ रहे हो। वाइल वर्किंग आई रियलाइज कि जब भी प्रॉब्लम आती थी, जब भी कुछ ऐसा टॉपिक आता था कि इसको कैसे रिजोल्व करना है, आई यूज टू ऑलवेज वंडर कि यार क्या करें। और फिर मैं भी वही करती जो हम सबने किया था कि सारे एल्गोरिदम टेस्ट कर लो इसके ऊपर। डेटा सेट तो पड़ा हुआ है, हमने ईडीए भी कर लिया, हमने सब कर लिया, तो अब करना क्या, एल्गोरिदम टेस्ट करने की कौन सी अच्छी है, सारी अप्लाई कर लो। एंड देन आई रियलाइज, ऐसे गलतियां कर करके ही आई रियलाइज कि सारी अप्लाई क्यों करनी है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे फिट कौन सी होगी। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द रिसर्च पेपर। ठीक है, तो हमें ना हर चीज पता हो जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी पता है ना उसको इतना डेप्थ में पता होना चाहिए कि सामने वाले ऐसे ओ में आ जाए कि ओ ऐसा भी था क्या, इवन आई myself didn't know, थैंक यू फॉर टीचिंग मी। तो हैव एटीट्यूड कि कोई 2-3 टॉपिक तो जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना तो ऐसे हो कि आप सामने वाले को सिखा के आ जाओ। Definitely. नेवर हैव द गोल कि इंटरव्यू क्लियर कर, हैव द गोल कि सामने वाले को ये चीज सिखानी है मुझे। Amazing, तो amazing. सामने वाला इम्प्रेस तो होगा ही होगा आपसे। देखो जॉब मिलना ना मिलना, आई बिलीव इन डेस्टिनी सो मच। मतलब मैंने Definitely. आई टोल्ड यू ना, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट बट आई Yes, बिकेम yes, डेस्टिनी। yes. आई बिलीव इन Destiny. डेस्टिनी सो मच कि जहाँ पे आपको जॉब मिलनी होगी यू विल पुट इन योर एफर्ट्स एंड यू विल गेट दैट जॉब। लेकिन इन एवरी इंटरव्यू हैव दिस एटीट्यूड कि जॉब मिले ना मिले सामने वाले को आपका नाम याद रहना चाहिए कि भार्गवी आई थी। Absolutely, definitely. I don't know, but when I normally talk to people who are already working in the industry, they give me like technical information that okay, yeah, do this, practice this, do this Gen AI project, do this agentic AI project, do this that. But what you are sharing is something that will make you stand out, that will create an impression of you. So these suggestions are very much helpful, and I'm really grateful that I'm getting to hear it right from the point where I'm going to begin my career. And I'm like, this is going to be invaluable for everyone who is watching this particular podcast and going through your experience and everything. So I think what you have shared is a whole bunch of very precious and important stuff to keep in mind. And of course one thing is कि destiny जो है तो उस पे ट्रस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, बट वन थिंग इज कि हमें अपना भी बेस्ट देना है, लाइक यू सेड कि हाँ, यू नीड टू क्रिएट एन इम्प्रेशन कि भाई भले आगे जो भी हो बट एक इम्प्रेशन बननी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम यू कि बाकी डेस्टिनी का प्लान है, मे बी देर कैन बी सम मोर, सम टर्न, मे बी सम मोर डी, सम मोर ए, whatever would be pre-planned for you, but just give your best, just create an impression. So that is very influential of you. And I can see a person who can influence people in a very good way from what you are saying. And जो जिस टाइप की एनर्जी मतलब मुझे लग रही है ना, it's very like rare कि जब आई एम टेकिंग अ पॉडकास्ट एंड
most of the time hearing and I'm just nodding and I'm gaining knowledge, because most of the time I'm just repeating and relating it to my life, but this time I'm just sitting and I'm just taking in things. So of course, like this is a completely different experience for me. And चाहे वो data science हो या फिर the perspective of life हो, I as a person has have gained a lot of things from this. So I would like to ask you, you have told about the philosophy and the logical POVs of how to deal with different scenarios. So I would like to ask you, what is a core belief or a life lesson फ्रॉम योर जर्नी जो आप अपने यंगर सेल्फ के साथ शेयर करना चाहते हैं? एनी थिंग, अ कोर बिलीफ या फिर कुछ भी दैट यू वुड लाइक टू शेयर, और मे बी एडवाइस हो या फिर जस्ट एज अ normal conversation that you would like to tell your younger self? Not just my younger self, but everyone out there, I want to address this thing. There's this one very beautiful poem by Nida Nayab. I don't know if you have heard her name or not, but the poem is about मुस्कुराओ. So मुझे ऐसे याद तो नहीं है, उसका जिस्ट दे सकती हूँ मैं. इसका जिस्ट ये है कि अगर कुछ बुरा हो गया तो ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा तो नहीं हुआ. राइट, राइट। कुछ आपसे छूट गया, कुछ आपसे छिन गया, तो ये सोच के मुस्कुराओ कि किसी को ज़रूरत थी आपसे ज़्यादा, उसको मिल गया. और कुछ अगर आपके पास बहुत दुःख है, तो बाँट के मुस्कुराओ. अगर बहुत खुशी है, तो सबके साथ उसको शेयर करो, फिर मुस्कुराओ कि आपने कुछ अच्छा किया, आपने सबके चेहरे पे स्माइल लाई, तो मुस्कुराओ. दिस यस। मुझे पोएम याद नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार जाकर ज़रूर सुनना. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. उसका मीनिंग बहुत प्यारा है. और आई पर्सनली बिलीव कि हम सबको ना ये अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. इवन माई यंगर सेल्फ, जब मैं आई वॉन्टेड टू परस्यू क्वांटम फिजिक्स, जैसे मैंने बताया था, पहले डॉक्टर बनना था, आई कुड नॉट बी दैट. फिर क्वांटम फिजिक्स पढ़नी थी, आई वॉन्टेड टू बिकम अ साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और ये सब करने का बहुत मन था मुझे. एंड आई कुड नॉट डू इट. कोविड आ गया. आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, आई वुड से, वेरी फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम कि क्या हो रहा है लाइफ में. इवन दो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, उस टाइम पे मैं बहुत वैसी हो गई थी कि यार आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग गुड विथ माई लाइफ. मैंने 2 साल पहले भी वेस्ट किए, ड्रॉप लिया, ये किया. नाउ ऑल्सो आई एम वेस्टिंग माई टाइम बिकॉज ऑफ कोविड. इवन दो आई वॉज वर्किंग एज अ कॉन्टेंट राइटर, आई वॉज अर्निंग. इट वॉज नॉट कि मैं बिल्कुल ही खाली बैठी हूँ एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम. पर वो दिमाग में थॉट थी कि वट एवर आई वॉन्टेड टू डू आई एम अनेबल टू डू. क्वेश्चन मार्क था मेरी लाइफ पे कि वाई, वॉट, वेर आर यू, वाई आर यू सो लॉस्ट, राइट? तो आई वॉन्टेड टू टेल माई यंगर सेल्फ एंड टू एवरी वन आउट देयर जो क्वेश्चन मार्क लगाकर बैठे हैं अपनी लाइफ पे, दैट लाइफ इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क. स्माइल, that is life. Always smile in every situation, every scenario. Smile, because when you smile, your mind is free. When your mind is free, when it is decluttered, you know how to think. And when you know how to think, you know how to find a solution. कैसा भी रास्ता हो, कैसा भी पाथवे हो, अगर आपको पता है कि आपको चलना ही है, तो you will find a way जहां पर आपको कम पेबल्स लगे आपके पाँव में. पूरे रास्ते पे पेबल्स बिछे हुए हैं, यू विल हैव टू वॉक, बट यू विल फाइंड अ लूप होल कि अच्छा ये साइड में ना मिट्टी ज्यादा है, व्हाई नॉट वॉक फ्रॉम द साइड. वो सोचने के लिए ये डिक्लटर होना बहुत जरूरी है. इसको डिक्लटर करने के लिए स्माइल इज वेरी एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट. तो करेक्ट। नो, अ दिस इज वेरी वेरी, स्मॉल लेसन या, आई वुड गिव टू माई सेल्फ ओनली. yes. No, of course, like this lesson, as you told, it is for everyone out there. Any situation, just don't, just cage yourself and just keep overthinking. Because you told that you have taken drop 2 times for NEET. So back in, I recollected my high school days. So उस time पे भी the thing was that once my 10th result came, suddenly COVID came. सो 11th 12th जो साल मैंने सोचे थे कि मैं स्कूल में अपने अपने बेस्ट मेमोरेबल ईयर्स होंगे, वो सब दोनों साल मैंने घर पे गुजारे. एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ऑनलाइन स्टडीज एंड एवरीथिंग, आई हैड टू डू माई जेई प्रेपरेशन एंड आई कुड नॉट गिव माई बेस्ट एंड आई कुड नॉट गेट माई ड्रीम कॉलेज. मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा. एंड इट वॉज वेरी अनकन्वेंशनल कि मेरी फैमिली में किसी ने साइंस भी नहीं लिया था, एंड फॉर देम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वाई यू आर taking 1 year after 12th to prepare for an exam. And that was very stressful because I was caged in my house and there were a lot of thoughts. So this is not just for your younger self but for everyone out there. So
Definitely, that was amazing to hear. And at the end, like, if a listener could only take away one piece of advice from your our conversation today, चाहे वो career का हो, चाहे वो life perspective का हो, या फिर any sort of message, what would be the one message? जैसे एक तो आपने भी बोला that मुस्कुराहट, like don't leave that. So, at the end, what would be that one message that you would strongly like to give everyone watching this particular podcast? हमने हमने एक बात एड्रेस की थी बीच में कि एक ड्यूरेशन था, एक टाइम था जब इंजीनियरिंग बूम पे चल रहा था, सब लोग इंजीनियर्स बन रहे थे। फिर आज एक टाइम आ रहा है जब सब लोग जेन एआई और डेटा साइंस वाली फील्ड में जा रहे हैं। तो मैं जो एक लेसन देना चाहती हूँ, इट इज नॉट अबाउट करियर एंड लाइफ, इट इज इन जनरल एवरीवेयर यू कैन इम्प्लीमेंट इट, एनी पार्ट इट, इन लाइक हर जगह। Right. आप शादी कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी एस्पेक्ट में हो लाइफ के, आप उसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और वो लेसन ये है कि आप कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। As they say, comparison is the thief of joy. It is actually a thief of joy. Never compare yourself with anyone कि शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, आंटी के घर में पनीर की सब्जी बनी है तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी, नहीं। फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि आपको पनीर की सब्जी क्यों खानी है, हैव द व्हाई क्लियर, अंडरस्टैंड द Yes. हाउ, एंड Yes. ओनली देन डिसाइड कि कहाँ से कैसे क्या करना है। Hmm. तो नेवर कंपेयर, नेवर सी कि यार ये रेस है, सब लोग आगे जा रहे हैं, सब लोग पैसे कमा रहे हैं और अगर मैंने नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगी, नहीं, यू वोंट बी लैकिंग बिहाइंड। नेवर हैव दैट क्वेश्चन, ऑलवेज हैव वन Correct. क्वेश्चन कि व्हाई, if I go this in this field, why, if I cook this, why, if I wear this, why, if I am going out to have brunch, why. Always have the why clear. Once you have the why clear, you know what you have to do and how you have to do. And once you have that clarity, your life will be a successful and a very happy life. हो सकता है आपने शायद 10 लाख का पैकेज पहले ही जॉब में नहीं क्रैक किया हो, मे बी पॉसिबल, या ये भी पॉसिबल है कि आपने शायद पहली ही जॉब में 40 LPA का पैकेज क्रैक कर लिया हो, Yes. बट व्हाट यू विल हैव द कंटेंटमेंट इन योरसेल्फ कि जो भी था बढ़िया और मजा आ Right. गया। Right. Every day will must feel like it is worth living, and that is one key lesson you should take out from this podcast, ki enjoy this life while you are here, because you don't know the future, you don't know what will happen once you die. So enjoy this life, enjoy this time, because this day, this moment will never come back. Live in today. Absolutely. Never, never. This moment will never come back. And second thing is contentment. कि जो self contentment, developing self contentment, being happy with who you are, and not just because someone else is doing that. It's a very, I think it applies to everyone out there, as you told कि हर point पे, any profession, any stage of life, this is one thing that of course I will also now take care of this, because as students, like, we tend to compare कि हाँ भाई ये कर रहा है, so I also need to do that. So I think this attitude will really help, and it really helps. So yeah, thank you so much for that. And this conversation has been extremely insightful and helpful in multiple ways, to not just me but for all the people who have been watching this. So if someone wants to connect with you, or on social media, where can our audience connect with you or follow your work online, or just get in touch with you? So usually if people wants to connect, LinkedIn is the way Yeah. where you connect professionally, where you share career things, and you talk about career things, or professional life in general. So LinkedIn is the platform. But when you feel about the life in general या philosophy in general कैसे deal करना है, so I also share these things, the life journey, how to deal with life and how to take care of yourself on my Instagram. So the Okay. best way to connect with me professionally is obviously LinkedIn. But if you ever get stuck in your life and you want a guidance there, you can always reach me out on my Instagram.
Sure. अगर आप So रीच I आउट will. नहीं भी कर रहे हो तो दैट पेज इटसेल्फ विल गिव यू सो मेनी थिंग्स, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ आई पोस्ट जो शायद कभी ना कोई रिलेट कर लेता है उस। Right. Right. तो Sure. Sure. इट So I डिपेंड्स will कि make व्हाई sure. यू आर रीचिंग आउट टू मी अगेन व्हाई हैज टू बी क्लियर। Definitely, why has to be really clear, but whatever your why is, I will drop your socials in the description so that श्योर। whatever the why of the audience is, if the why is technology and data science, they'll go to your LinkedIn, or if they just want to have your dose of perspectives or just normal life things, they'll just follow you on your Instagram or something like that. So I'll be providing your socials in the description. And at the end, like heartfelt thank you for taking out so much of your time and being so energetic throughout the podcast, and just giving your raw and honest opinions on what has worked for you and what people should actually focus on, rather than just going with the hyped terms ki ye karo wo karo. Just thank you for sharing what you think should be kept in the mind for different scenarios and different places in life. So thank you so much for your time, your efforts, and everything, Heenal. uh, just as a student, just keep guiding me whenever I need your perspective, or the your POV to just get clarity. Thank you so much for taking out your time again. And it was a really great conversation. And I hope that we'll be connected, and we'll be exchanging ideas ahead also. And I'll be gaining more insights from you. Actually, I myself am very grateful because uh, you have provided me with this platform where I can actually come and address the youngsters out there कि जो गलतियां मैंने करी हैं, please don't do that. तो I always wanted to do this. मैं हमेशा सोचती थी कि how should I reach out people and how should I tell them कि यार I did this mistake and I want कि at least लोग ये mistake repeat ना करें, Right. right? तो मुझे बताना था, मुझे वो करना था, पर I was not able to find a way कि मैं कैसे करूँ, and somehow Yes. destiny helped us. Destiny again. Yeah. Everything happens Destiny by destiny. again. I have realized this. It happens by destiny. I don't know, this is just a normal conversation. Like, I don't know, Nikhil sir suggested me your name, that she is there. And the first time, like, I had a talk with you, I had that instant connect ki, yeah, of course I want to like have this, I want to make this happen. And then finally, like, we are here. And I myself am getting to learn so many things. And you are able to find what you wanted to address and share your thoughts and everything. So I actually believe it is destiny somewhere and everywhere, Yeah. which is making things possible, and I'm really grateful for this. But in order for destiny to work, you have to have the plans कि ये करना है. अगर Of आप course, चाहोगे of तो फिर course, destiny will work in your of favor. course. Yeah, so बैठे it बैठे तो works in destiny will not favor. come. Yeah, so it has to be combined with your plans and your Yeah, efforts also. Otherwise, we could have exactly. just procrastinated, and then maybe this could have never happened. So again, Exactly. like, it's your, mostly I'll say it's 90% your effort that has been here. The way you have been throughout, it's almost 2 hours actually. The recording is 1 hour 30 minutes, but still, I know the energy it takes, and the way you were sharing. I think you are a really good public speaker, so that way you have a lot of potential. Tech में Thank तो you. आप हो ही, आप tech में तो हो ही, you are at the top. But I think apart from that also, you have a lot of potential, and you are influencing and impacting so nicely. So I hope Thank this you. podcast Thank you will so much. reach people, and Yeah. this will change their perspectives, their life as a whole. क्योंकि for me I at hope least, जो it चीज़ make a difference to at least one soul out there तो लगेगा कि successful हो गया है. yes, yes, of course. Not one. I'm sure it will reach a lot of people out there who will need this. Yeah. तो students को ये clarity ज़्यादा चाहिए होती है. Even people from high ages like 30, 40, what you have said will apply to every age group. But if there is someone from 18 to 24, and they'll hear these things, they'll change their vision
or maybe their entire life. So it's like one life that you are impacting. So thank you so much for just all your efforts, all your energy, and your thoughts and perspectives and everything. Thank you so much, Needle. And thank you so much for helping me come I'm out grateful. and I'm grateful for this. I am very humbled, and I'm grateful for you being here because I have never had any guest like you before that I have enjoyed listening so much and gaining so much. So again, I cannot stop thanking you. So definitely thank you for your time. Thank you for your efforts. And yeah, so that's how I'd like to end this podcast, this conversation that has been so nice and amazing. thank you. Have a Thank you good so much. life and have a good day.